in 2 hours 30 minutes we made $41, so it will be around 17.5 something dollars. Good morning everyone and welcome back to my channel, and I believe that you definitely like the previous vlog which I posted yesterday. This vlog will be gonna on request of Abdur Rahman. He wanted me to make a video on Uber in English, so today I'm gonna show him and to everyone as well that how much you can make by doing just Uber Eats in Canada. And the thing is, right now I have my main job, so my main job will be ending by at 4:30 p.m. and after 4:30 p.m. I'm gonna start my Uber, and then we'll see how it goes from there and we'll keep you updated. So for now, let's go and let's leave for the job, and then we'll meet at 4:30 p.m. So I'm gonna start my day by drinking tea. So let's start making tea and then have it and then leave for the job, because I have to reach by 8:30 over there. You guys know that. And तो भाई चाय तो हमारी बन चुकी है इसके अंदर, हमारे जूम लेंस के अंदर हमने अपनी चाय रखी हुई है. तो अब बस अब निकलते हैं, टाइम हो चुका है निकलने का, एंड पहुंचते हैं काम पे टाइम से. We are all set to start Uber right now. So the job was supposed to be ending at 4:30, but they give us early off at 3:30 p.m. So now I've reached to Brampton, and now I'm gonna start doing Uber, and we'll post an hourly update how it's going on, and what is the order, what amount of orders I'm getting, and how much I made in per hour basis, so that you'll be having a clear cut idea by the end of the like 3-4 hours. I'll share the update, like how much I made and how many hours I worked and how many kilometers I driven and how many trips I got it. So by that you can have a clear idea. So I think Abdur Rahman, you'll know about everything by this end of the video, that how Uber Eats work in Brampton, in Toronto, and in other regions it will be little bit different, but I'll just give you a basic idea about it. Okay, so guys, after so long I just received an order. Why I didn't take multiple orders which I received it before, the reason why is that I want to make sure that I'll get that order where the kilometers are less, and if I have to shop the item, that is less and the pay is more. So generally whenever I pick an order, I pick more than about $5, so that it will not break my car a lot, and plus I'm able to do it on time, and plus I earn good money in an hour, if I say so. So that's what my game plan is. So whenever you're gonna start Uber, make sure you only go for minimum $5 order, and where the like you don't have to shop. If you're going to do shop and deliver, there should not be more than 10 items in an order, then it will be perfect for you. And yeah, and see the kilometers as well. It should not be more than like if you're doing $5 order, it should not be more than 2.5 kilometer, not 2.5, I must say. It should not be more than 5 kilometers. So then it is a good order, otherwise it will not be. So we did the order, and it was of $9, if I have not mentioned previously. So the delivery time is 14 minutes, which is 4.4 kilometer approximately, and for 4.4 kilometer, $9, it's not too bad. So it's okay. And yeah, now let's head out for the delivery, and then I'll see you after 1 hour. So guys, in 2 hours 30 minutes we made $41, so it will be around 17.5 something dollars. We were online for 3 hours, but the active hours was 2 hours 24 minutes. So if we're gonna balance it out, it's gonna be the same. But if we see, like, we started the Uber at 5 p.m. and now it's 8, so till in 3 hours we made $41. So Mr. Abdur Rahman, if you are thinking that Uber should be your primary job after coming to Canada, then that's wrong. You should not be doing
Uber for a primary job. It can be secondary, it can give you extra income here and there, but not for the full time. Uber, I'm talking about Uber Eats. If you're gonna do Uber rides, then that will be more beneficial. For that, you need to have the 2015 above car, and on top of that, you need to have a G license over here. So if you have these two things, then probably you'll able to eligible for Uber rides, and that will help you to make more money. The thing is why the orders are less, because the thing is I didn't picked up too many orders as well because of the distance, as it was throwing me to Etobicoke from Brampton and to the Mississauga as well for some point of time, and that's not useful, because by that your car will gonna break more and you're gonna earn less. Anyway, you have to come from there without having any order, so that means that there is no use for that. So that's why I don't pick up the too far orders. Still, whatever the orders I did, it was also more than 15 kilometers, 16 kilometers, which I was not expecting, but anyway we have to do something, so that's why I've picked those orders. So that's what my recommendation to you. So think it wisely, brother. Think it wisely. Don't make it Uber as your primary job. So I've did the most of the vlog in English. Now let's come to the मन की बात वाला part, वो जो मैं हिंदी में रिकॉर्ड करूँगा because for my Hindi audience. So तो भाई एक चीज़ जो हमने बीच में बात की थी, जिस पे हमने छोटी ज़्यादा बड़ी इलेबोरेटिव वे में बात नहीं की थी, बट एक छोटे से पॉइंटर की तरह बात की थी उसके ऊपर, वो है लाइक गेटिंग क्रेडिट कार्ड्स. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रेडिट कार्ड्स क्या लेने गलत हैं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं होने चाहिए. क्रेडिट कार्ड्स ज़रूर होने चाहिए, बट अगर आप इंडिया से हो, आपको पता है कि हमें एक चीज़ जो सिखाई गई थी वो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. सो सिमिलरली वो रूल ना हमेशा यहाँ सही ही होता है हर जगह, बट इस कंट्री में आके क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट कम्स इन एज वेल. दे शो यू एज दैट. ऐसा होता नहीं है. तो एक चीज़ जिनके चक्करों में मत पड़ना, वो है क्रेडिट कार्ड्स यार. पीपल विल गाइड यू कि हाँ ये क्रेडिट कार्ड ले लो, इससे आपको ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, उससे ये बेनिफिट्स मिल जाएंगे. अगर आप स्मार्ट हो, आपको यूज़ करना आता है, तो यूज़ करो सही से. बट अगर आप पहली बार आपके घर में आपके मम्मी पापा ने क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं पता कि कैसे यूज़ करना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि जो सिर्फ बैंक से मिलता है जब आप GIC करा के आते हो, वो वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ करो. उसके अलावा ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मत अप्लाई करो. बिकॉज हम क्या सोच बैठते हैं ना कि हाँ यार हम यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पे कर देंगे, बट दे हैव वेरी हाई इंटरेस्ट्स. एंड अगर हमारी 1-2 पेमेंट मिस हो गई गलती से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे साथ, हमारा क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट हो सकता है. क्योंकि कनाडा ऐसी कंट्री ना, यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ बहुत हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास किसी एक चीज़ की सर्टेनिटी, अगर तुम्हारे पास एक जॉब है तो वो हाँ लंबे समय तक रहेगी. यू नेवर नो व्हाट गोना हैपन, बिकॉज कनाडा एक रिसेशन की तरफ जा रहा है, अब एक मास रिसेशन की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेगी. तो अपनी स्पेंडिंग पावर को कम रखो. यहाँ पे तरीका ही इनका पैसा कमाने का ये कि लोगों की स्पेंडिंग पावर को बढ़ाओ एंड उसमें से टैक्स और इंटरेस्ट के थ्रू पैसे ऐडते रहो, तभी तो इनकी इकोनॉमी रन करती है. तो दैट्स यू शुड नॉट डू इट. बेटर है तुम्हारे फाइनेंसेस भी इजीली मैनेज रहेंगे अगर अब तुम सिर्फ डेबिट के ऊपर ही खर्चा करोगे. तो हाँ, अगर तुम्हें जैसे इंडिया की टिकट करानी है, कुछ बहुत ही बड़ी ट्रांजैक्शन, जैसे तुम्हें पता है कि अभी मेरे पास डेबिट में इतना पैसा नहीं है, बट मैं उसमें डाल दूंगा इवेंचुअली, तो फिर वो करो यूज़, बट उसके अलावा मत करो. रखो अपने पास फॉर बिल्डिंग क्रेडिट, बट यूज़ इट नॉट मोर देन 30 to 40%. दैट्स इट. इसके अलावा मत यूज़ करना. तो अगर ये पॉइंट पसंद आया तो देख लो, लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना. तो हाँ जी भाई, आए हैं तवा किचन खाना लेने के लिए एज़ यूजुअल. ये तो एक रूटीन ही बन चुका है. तो अब तवा किचन में जाके खाना लेंगे एंड खाना लेके फिर घर जाएंगे. तो आज के व्लॉग में बस इतना ही. अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ये की तो लाइफ है, खुल के जियो भाई.